Really need to talk much about the location. Thank you very much for the strategic planning team to ensure that there was enough traffic on the way today, ताकि यहाँ पे आते वक्त सबको ये पता चला कि कितने busy area में जा रहे हैं. No, that was on the lighter side because I know many of you were braving the traffic. Some of my friends out over here were telling me 2.25 घंटे. They appreciate that. Prime location in central West Delhi. We are talking about premium showrooms, lockable premium spaces, residential community, 2.5 lakh families multiplied by 4, and I am just talking about a 5 kilometer radius from here. जिस जगह पे इस वक्त हम लोग हैं, इससे 5 किलोमीटर के रेडियस में 2.5 लाख परिवार बसे हुए हैं. सो नो मोर टॉकिंग अबाउट दैट स्टोरी कि जी यहाँ पे इतना रेजिडेंशियल आएगा. फॉर अ चेंज वी आर एट अ प्लेस जहाँ पे ऑलरेडी इतना रेजिडेंशियल एग्जिस्ट करता है. द नियरेस्ट मॉल फ्रॉम हियर इज एग्जैक्टली 7 किलोमीटर्स अवे इन सुभाष नगर एंड इन NSP, 2 of them. What we are talking about is some fantastic investment opportunities. For those of you who are still not aware, the complex, the Delhi Mall, has retail stores, anchor stores, 9-screen multiplex, food and beverages stores, multi-level car parking, 3-level ka basement, and apart from that, 6th, 7th and 8th floor is also car parking, bars and restaurants. Let's move ahead, please. Apart from you, our other proud partners, different brands which we are associated with across a couple of our projects, including Delhi Mall, primarily the who's who of the industry we work with. One slide which is very important, just stay out over here for a second please. किसी भी प्रॉपर्टी की प्राइस उसके रेंटल से कैलकुलेट की जाती है. जितनी भी उसकी एनुअल रेंटल यील्ड है, कोई भी अगर आप प्री लीज प्रॉपर्टी खरीदते हैं अपने लिए या अपने इन्वेस्टर्स के लिए, तो एम आई राइट इन सेइंग कि करीबन 6%, 5.5-6% का रिटर्न आता है कमर्शियल में. एम आई राइट इन सेइंग दैट 6% के आसपास का. तो एक सिंपल मैथ करते हैं, अगर रेंटल पर स्क्वायर फीट 1000 रुपया है, रेंटल पर स्क्वायर फीट अगर 1000 रुपया, तो साल का कितना हो गया? 12,000. और अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 6% की है, तो उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 लाख पर स्क्वायर. इट शुड बी 2 लाख रुपीज पर स्क्वायर फीट. सुभाष नगर रेंटल एट द करंट पैसिफिक मॉल, चाहे तो गूगल करके देख लीजिए, वेरीज फ्रॉम 750 टू अबाउट 1500 डिपेंडिंग ऑन द फ्लोर, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड, बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ फुटफॉल विच इज हैपनिंग. वसंत कुंज 1000 से लेके 1500 रुपया, पीतमपुरा 600 से लेके 1800 रुपए के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द फ्लोर. The most expensive mall in India in terms of rental is Select City Walk, and it commands a rental of 2,305 rupees per square feet. साल का अगर आप देखेंगे 12 से इस नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, so that's approximately 30,000 के आसपास आएगा. हाँ, about 29,000. सर मेरी मैथ्स कमजोर है, इसलिए मैंने पहले ही राउंड ऑफ किया 30,000, क्योंकि अगला सवाल मुझे पता है 6% के हिसाब से मार्केट वैल्यू क्या होनी चाहिए. अगर 30,000 रुपए का रेंटल है साल का, तो 6% के हिसाब से उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू होनी चाहिए 5 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट. So the reason for this is because whenever we talk to our investors, हर कोई ये जानना चाहता है कि जी प्रॉपर्टी की प्राइस कितनी है. Property की price is always determined by
the rental yield. Let's move ahead. And ladies and gentlemen, pleasure and honor to share with you that now we are launching the Lockable Showrooms in Delhi Mall. The lockable spaces in Delhi Mall, exclusive spaces for exclusive people. When I say exclusive spaces, the reason I say that, if you all are aware about the product that we have out over here, I always like to go back and understand reason of what we do, why we do it. This is a mixed use land. मिक्स यूज में आपके पास ऑप्शन होती है कुछ भी बनाने की। अगर हम चाहते, मैं कई बार ये बहुत लोग सुन चुके होंगे मेरे से, चाहते तो इधर होटल भी बना सकते थे, चाहते तो हॉस्पिटल भी बना सकते थे, और जो भी बनाते इस एरिया में चलता। बहुत सोच समझ के यहाँ पे नवीन मीनार बनाया गया और साथ में द दिल्ली मॉल, a place which has a natural demand. Because of close vicinity, the demand is there. Luxury spaces, a tourist destination. And so in any case, an exclusive property. And within that exclusive property, the lockable showrooms makes it further more exclusive. We all understand one thing about real estate. It is all about demand and supply. Numbers अपनी जगह,
जब कोई चीज की एक्सक्लूसिविटी बढ़ती रहती है, उसका प्रीमियम ऑटोमेटिकली बढ़ता रहता है. So let me tell you why we are saying that this lockable showrooms is actually going to be a very, very exclusive thing. Deal of the decade. ग्राउंड फ्लोर. अभी हमने एक रफ मैथ्स की थी. हाउ मेनी ऑफ यू वुड एग्री अगर मैं ये बोलूं कि जो 7 किलोमीटर दूर मॉल में रेंटल यील्ड चल रही है, पोजेशन से 2.5 से 3 साल के अंदर हम उसके बराबर पहुंच सकते हैं, इफ नॉट बेटर. हाउ मेनी ऑफ यू वुड एग्री? हाथ उठाइए. आसपास देख लीजिए. दे आर quite a few people who agree with that statement. और उसके हिसाब से अगर हम चलें, so the pricing currently we have kept it at a level so that our investors can make money with us. ताकि आज की डेट में जब वो एंटर कर रहे हैं at a particular price point, there is enough scope for them to make a very good capital appreciation. So the ground floor and the third floor is at a price of 1,75,000 rupees per square feet. The second floor is at a price of 1,25,000 per square feet, and the first floor is at a price of 1,50,000 per square feet. So we are also introducing a new payment plan to make it more pocket friendly for the investor. We are introducing a new payment plan. We are saying pay 50% now, 25% happens on the completion of the building and another for the completion of the facade, and 25% on the offer of possession. So we are scattering the payment plan, understanding कि एक exclusive चीज है, cash flows would work differently. So we have designed that, keeping that factor in mind. But that does not mean the investor will not get the returns. The returns would still continue. I am not going to steal the thunder away from this one. Actually, if you look at the bottom line, 1.2 crores, simply any person investing 10 crores with us will get this kind of a rental yield or income flow starting right from the day they make the investment. So one option, one reason why I say this is a good thing, which is about the payment plan. Let me tell you why more. 12% is short returns for 2 years. आप सबको पता है. Those of you who are involved out over here are already aware about it. We do not pay these returns. We get the bank to pay it. उससे इन्वेस्टर को 2 एडवांटेजेस क्लियरली आते हैं. पहली चीज, अनलाइक एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, अगर वो रिटर्न्स के लिए पैसा डेवलपर के नाम पे चेक काट रहा है कमर्शियल प्रॉपर्टी में, तो 12% का जीएसटी एक्स्ट्रा बर्डन उसके ऊपर आता है. The moment we route it with a bank, that thing does not get impacted. And another one, everything said and done, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम एक डेवलपर हैं. ये चीज बोलना कि अगले 24 महीने तक एक डेट, एक टाइम पे इन्वेस्टर के अकाउंट में हम पैसा क्रेडिट करेंगे, सर इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए. ये एक्सपर्टीज हमारे पास नहीं है. ये एक्सपर्टीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास होती है, बिकॉज दिस इज द वर्क दे डू. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी भी इन्वेस्टर से आज की डेट में अगर हम बात करें और रिटर्न्स की बात करें, तो वो सबसे पहले ये समझना चाहता है कि मेरे रिटर्न की सिक्योरिटी या गारंटी क्या है. तो हम सीधा कह रहे हैं, सब आपकी पैसा जो आपके पास वापस आना है वो हम नहीं दे रहे. दीज आर द ब्रांड्स where we have the tie-up, they are the ones who are paying it. Next slide, please.
द इनकम स्ट्रीम नंबर 2, पहले 2 साल के लिए शॉर्ट रिटर्न, उसके बाद अगले 4 साल के लिए 4 years we are giving a lease guarantee. Now please understand, investor perspective, yes, lease guarantee is there. हम ये अपने रीजन से भी दे रहे हैं. It takes about 2.5 से 3 साल लग जाते हैं किसी भी मॉल को फुल फ्लेजेड ऑपरेशनल होने में और रेंटल यील्ड एक लेवल पे आने में. तो हम नहीं चाहते कि इन्वेस्टर्स भी परेशान हो. हम उन्हें कह रहे हैं साहब आपको हर महीने के महीने साल के 9% के हिसाब से 4 साल तक रिटर्न आएगी. हमें इफ यू लुक एट आवर रेंट एग्रीमेंट, हम इस मॉल को आईपीसी को दे रहे हैं चलाने के लिए. इट्स गोइंग टू बी कुशमन, वेकफील्ड, कॉलियर्स और जेएलएल. हम उनमें से किसी को ये मॉल चलाने के लिए दे रहे हैं. My personal favorite is Cushman in Wakefield because they run retail spaces in about 100 countries. 156-year-old company known for running retail spaces in malls globally. Giving it to them, you have to give them time to run it their way. Capital appreciation के लिए वो जरूरी है. इसीलिए we said to the investors we will give a 9% lease guarantee for a period of 4 years so that the pressures aren't there from their side. But investor perspective said this is also again a guaranteed kind of a return coming in from one of these brands. Let's move ahead. और जो ब्रांड से एक्चुअल टेनेंट से किराया आएगा एज इट इज पूरा का पूरा उस इन्वेस्टर को जा रहा है. जितना पैसा आ रहा है पूरा का पूरा इन्वेस्टर को जा रहा है. पहले इस स्कीम को नाम पे कई बार हम इसको डबल इनकम या कोई चीज कहते थे. वी आर नॉट गेटिंग इनटू ऑल दैट. वी आर जस्ट सेइंग व्हाटएवर रेंटल्स एक्चुअल्स विल बी देयर बिकॉज द इन्वेस्टर इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. दे हैव द राइट टू गेट द कंप्लीट मनी. सो अपार्ट फ्रॉम द 9% लीज गारंटी वी आर ऑल्सो गिविंग ऑल एक्चुअल्स. नाउ दिस रियल एस्टेट में नॉर्मली ये चीज नहीं होती. दोनों में से एक चीज मिलती है. दिस विल रेयर कॉम्बो जहां हम बोल रहे हैं दोनों चीजें मिलेंगी. एंड ऑफ कोर्स कैपिटल एप्रिसिएशन फॉर 2 reasons, the kind of rental yield we'll get and of course not to forget the kind of exclusivity that this property gets along with itself. So the location, the luxury brands. अगर हम बात करें रियल एस्टेट में, बचपन में सुना था 3 सबसे जरूरी चीज रियल एस्टेट में क्या है सर? टेस्ट. सही जवाब देने पे आप मुझे चॉकलेट नहीं दोगे. What are the 3 most important things when looking for a property? First one is location, return on investment, and easy liquidity. That एक round of applause बनता है यार. First one is location. We are sitting at the most prime location. Second one, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इससे बेहतर मेरे को किसी भी रियल एस्टेट प्रोडक्ट की पूरे देश में लाके दिखा दो. ओपन चैलेंज. 4 साल की लीज गारंटी, 2 साल का रिटर्न टू बी पेड बाय द बैंक. कोई भी प्रोडक्ट लाके दिखा दो इससे बेटर. और जब ये कॉम्बिनेशन होते हैं तो इजी लिक्विडिटी अपने आप आ जाती है. वेरी सिंपल मैथ्स. 60% की हम रिटर्न दे रहे हैं. ब्रांड से 6-7% की भी रिटर्न आनी शुरू हो गई. 6 साल के अंदर प्रॉपर्टी फ्री. 7वें साल से इस प्रॉपर्टी पे जो भी आपको मिल रहा है वो आपका प्रॉफिट है. चाहे आप उसे बेचें तो जो कैपिटल एप्रिसिएशन आएगी या रखिए और उससे जो आपका रेंटल फ्लो आएगा दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉफिट. सो विद इन 6 years all the money that you have invested is actually going to be free in less than 6 years. And of course, कहते all good things come to an end. ये अच्छी चीज नहीं है इसलिए एंड नहीं हो रही. On this note,
I am going to request my colleague Vaishali to come in out over here.